Good afternoon, friends. Again, another video. Welcome to Mishra Magical Pathway Publication. Myself, Sarveshwar Mishra, retired Senior Superintendent of Post Offices, Cuttack City Division, Odisha. So, this channel is very useful to all the aspirants, those who are appearing in the departmental examination of Department of Post. I repeat, for Department of Post only, and some of the information are also related with the public. They can also view it, like PLI, RPLI, Speed Post, Savings Bank. These are all related items also for the public. So, the Government of India, Minister of Communication, that is PLI Directorate, has come up with a new rule on 4th February 2026, that is guidelines regarding submission of Form 15G and 15H during claim settlement of PLI and RPLI. It has been, the functionality has been deployed in APT 2.0, Advanced Postal Technology 2.0 में this functionality has been introduced, and it has been applicable, effective, with effect from 14 January 2026. The rule was circulated on 4th February 2026. So GST on this is TDS, tax deduction at source. This is TDS deduction at source when there is a payment of PLI, RPLI, maturity, surrender, and other payments. So, there are so many clarification on the issue. I will go only to the key points of the circular. So, this is TDS. Again repeating, TDS, tax deduction at source. One thing please remember, this is most vital. No TDS will be deducted from the claim amount if the Form 15G and the Form 15H declaration are submitted by the insurant and the PAN is available on the policy. When the TDS will not be deducted? The question is, when the TDS will not be deducted? TDS will not be deducted when the applicant submits Form 15G or 15H and when PAN number is linked with the policy. So there may be cases which may not be linked with PAN. So the insurant may be advised to give his PAN so that it can be linked with the policy. Moreover, no TDS will be deducted if the Form 15G and 15H is provided by the insurant. The DOP user should click in the application yes. The DOP user should select yes that Form 15G and 15H declaration has been submitted. So the basic point is that when 15G or 15H form is submitted by the insurant, no TDS will be deducted. If the policy is linked with the PAN number, then no TDS will be deducted. Both are interlinked. There should be 15G, 15H, there should be PAN linked with the policy. Please remember, this is most vital thing on this PLI, RPLI payments TDS.
now we will directly go to the various slabs, dates. Any sum received on death of a person, जो PLI RPLI का किसी का डेथ हो गया, इसमें एनी अमाउंट उनको मिलेगा लीगल हेयर को, सॉरी इसमें TDS एप्लीकेबल नहीं होता है. सो TDS विल नॉट बी डिडक्टेड इफ इट इज ए क्लेम लिंक्ड विद द डेथ ऑफ द इंश्योरेंट. डेथ केस में जो पेमेंट होता है, नो TDS विल बी deducted. Another thing, the aggregate amount of any kind of payment, maturity, surrender and or loan during a financial year. जब मैच्योरिटी डेथ केस में कुछ नहीं पेमेंट होगा, आपका हो गया. अभी मैच्योरिटी, सरेंडर और लोन, ये तीनों में सरेंडर एंड लोन, जो पॉलिसी लोन लिया होगा इसी में सरेंडर वो किया है. सरेंडर एंड लोन, मैच्योरिटी, सरेंडर एंड लोन, इसी में इफ द अमाउंट इज लेस देन 1 लाख पेमेंट का, इसी में TDS नहीं कटेगा. सो TDS विल नॉट बी डिडक्टेड व्हेन 15G 15H has been submitted, policy is linked with PAN, no TDS in death case sanctions, and for in maturity, surrender or loan cases, if the amount is less than 1 lakh, TDS will not be deducted. Overally 15G 15H देने से कुछ नहीं कटेगा. कोई नहीं दे पा रहा है, उसका कट जाता है. सो डिपार्टमेंट ने क्या किया है, they have classified the date of issue of policies, most vital. Policies issued before 1st April 2023. 1st April 2023 पहले जो पॉलिसी इशू हुआ है, याद रखिए, PLI RPLI, इसी में TDS नहीं कटेगा. 2003 तक अप्रैल का 1st April 2003 पहले जो इशू हुआ है, जो अमाउंट होगा इसी में TDS नहीं कटेगा. ये क्लियर आपका हो गया. Then another slab is policy issued between 1st April 2003 से 31st March 2012, April 2003 till 31st March 2012. इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा. इसी में क्या होगा, TDS के 15G 15H देने से तो कुछ नहीं कटेगा, पैन लिंक्ड होने से कुछ नहीं कटेगा. फिर भी वो नहीं हुआ है. फिर भी दिस पॉलिसी इज इशूड ड्यूरिंग 1st April 2003 till 31st March 2012. If the premium paid during any year does not exceed 20% of the capital sum assured, then TDS will not be applicable. इसको थोड़ा सा याद रखिए. मैं रूल को एक बार पढ़ता हूँ. प्रीमियम पेड ड्यूरिंग एनी ईयर डज नॉट एक्सीड 20% ऑफ द कैपिटल सम अश्योर्ड का 20% जो होता है, जो अमाउंट आएगा, इफ द प्रीमियम इज लेस देन दैट, देन TDS नहीं कटेगा. If the premium paid during any year exceed 20% of the capital of the sum assured, then TDS will be applicable. जैसे प्रीमियम ज़्यादा हो गया 20% से सम assured का, इसी में आपका TDS कटेगा. TDS will be deducted 2%. याद रखिए, 2% on the difference of the total payment amount and the premium paid. एक मैच्योरिटी केस में जितना पेमेंट होगा माइनस जितना प्रीमियम दिया गया है, इसको माइनस किया जाएगा एंड उसका 2% उनको देना पड़ेगा. TDS कटेगा 2% का हिसाब से. एंड दिस रूल इज एप्लीकेबल
This rule is applicable with effect from which date? Most important, 1st October 2024 से ये लागू हो गया है. These are the policy those were issued between 1st April 2003 till 31st March 2012. ये सेकेंड कैटेगरी आ गया. फिर आ गया थर्ड कैटेगरी, पॉलिसी इशूड बिटवीन 1st April 2012 एंड 31st March 2023. इसी में जो होता है, प्रीमियम पेड ड्यूरिंग एनी ईयर डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ द सम अश्योर्ड, टीडीएस नहीं कटेगा. इफ द प्रीमियम पेड ड्यूरिंग एनी ईयर एक्सीड 10% ऑफ द कैपिटल सम अश्योर्ड, इसी में 2% आपका कटेगा, पेमेंट अमाउंट माइनस प्रीमियम पेड. सो इसमें देखो, फर्स्ट जो स्लैब था 2012 तक 31st March 2012 जो पॉलिसी इशू हुआ है फ्रॉम 1st April 2003 1st April 2003 से 31st March 2012 तक जो पॉलिसी इशू हुआ है, इसी में प्रीमियम अमाउंट 20% से ज़्यादा होने से सम अश्योर्ड से आपका 2% कटेगा. लेकिन जो पॉलिसी इशू हुआ है 1st April 2012 टिल 31st March 2023, इसी में 10% अमाउंट, if the premium paid during any year exceeds 10% of the capital sum assured, then TDS applicable will be applicable, and this TDS will be 2% of the difference of the total payment amount and the premium paid. इसको how the TDS is calculated? TDS will be based on total amount payment minus premium paid, and the residual amount जो है उसका 2% उनको TDS कट जाएगा, provided he has not given 15G, 15H and the policy is not linked with PAN. नेक्स्ट कैटेगरी आ गया पॉलिसी इशूड आफ्टर 1st April 2023. ये जो करेंट का जो हुआ है, अभी जो हुआ है 1st April 2023 से अभी तो किसी का नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 साल का बात है, वो बाद में वो आएगा 10 साल 8 साल का बाद. इसी में एक सिंपल, इसमें परसेंटेज जो चीज़ था वो उठ गया है. इफ द एनुअल प्रीमियम पेड फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी does not exceed rupees 5 lakhs, then TDS will not be applicable. 5 लाख से ज़्यादा एक साल में आपका नहीं दिया है प्रीमियम, इसमें TDS नहीं कटेगा. इफ द एनुअल प्रीमियम पेड ऑफ एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, ये ईयरली होता है, याद रखिए. इफ द एनुअल प्रीमियम पेड फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी एक्सीड 5 lakhs, then TDS will be applicable. वही फॉर्मूला, 2% on the difference of the total paid amount and premium paid with effect from 1st October 2024. Note: no TDS will be deducted if the insurance submit the declaration form 15G or 15H under IT Act and the policy is linked with the PAN number. Most important. Another question, another important point, loan amount is not taxable, but when a customer surrender a policy after taking loan in that policy within the same financial year, then TDS will be applicable. वो लोन लिया है, सेम ईयर में सरेंडर कर दिया है, देन जो अमाउंट उसको मिलेगा 15G 15H नहीं दिया है, देन सेम फाइनेंशियल ईयर में ये सब होगा, देन TDS उनका जो 2% से 2% कटेगा, बेसिंग ऑन अमाउंट पेड एंड दी माइनस प्रीमियम पेड इन ये टोटल प्रीमियम पेड ऑफ द एंटायर पॉलिसी. हम आपको देता है, वन पॉलिसी वॉज प्रोक्योर्ड ऑन
आफ्टर 1 अप्रैल 2023। ये होने से आपको 5 लाख का जो पॉइंट उसको याद रखना पड़ेगा। सम एश्योर्ड हो गया 30 लाख का, पॉलिसी टर्म हो गया 7 ईयर्स का, मंथली प्रीमियम वो दिया है 45,000 हो गया। आपका ईयरली प्रीमियम होता है टीडीएस के लिए 45,000 मंथली होने से एक ईयरली प्रीमियम उनका हो गया 5,40,000। इसी में 5 लाख से ज़्यादा हो गया प्रीमियम ईयरली, सो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। उनका मैच्योरिटी अमाउंट हो गया 40,92,000। सो इसी में मैच्योरिटी अमाउंट, ये मैच्योरिटी अमाउंट हो गया 40,92,000। टोटल प्रीमियम वो दिया है 37,80,000। वही जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसका 2% होने से उनको 6,240 टीडीएस उनका कट जाएगा, प्रोवाइडेड वो 15G 15H नहीं दिया है। सो की पॉइंट्स ऑन टीडीएस, again repeating TDS, perhaps in the beginning I told that GST, it was a mistake. It is TDS on PLI, RPLI maturity payment, surrender payment linked with loan on the same financial year, maturity, surrender, loan. These are the things, and this is applicable with effect from आपका थोड़ा सा इसको और भी एक बार देख देते हैं। इट विल बी एप्लीकेबल सिस्टम में, ये आपका हो गया 24 जनवरी 2026, बट दिस टीडीएस विल बी implemented. TDS on PLI RPLI पेमेंट इज इफेक्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम, दिस इज ए क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2024। और इसमें बेसिक चीज़ हम आपको एक बार बता देते हैं। पॉलिसीज हैज़ बीन क्लासिफाइड इन 4 categories. That policies issued before 1 April 2003, no TDS applicable. Death case, no TDS applicable. Aggregate amount of any kind of payment in a financial year below 1 lakh, no TDS applicable. Policy issued second category 1 April 2003 से 31 March 2012. If the annual premium exceeds 20% of the capital sum assured, इसमें TDS कटेगा. TDS will be calculated 2% on the difference of the total payment amount and the premium paid. Then next category policy issued between 1 April 2012 till 31 March 2023. If the premium paid during any year exceeds 10% of the capital sum assured, then TDS will be applicable. Then another classification of a policy issued after 1 April 2003. If the premium exceeds 5 lakhs in a financial year, then TDS will be paid. What is the formula of TDS reduction? 2% on the difference of the total amount paid and premium paid is the formula. So इसमें आपको ये एक important question, to what is the percentage of the difference of the total paid amount and the premium paid for calculation of TDS, that is 2%. From which date it is applicable? 1 October 2024. In death cases, TDS is applicable? Answer is no. No TDS will be deducted in death when death payment is done. No TDS is applicable if the maturity surrender loan is below 1 lakh in the below 1 lakh. 1 लाख से कम जब पेमेंट होता है वही नहीं होता है. हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिसी पीरियड हैज बीन क्लासिफाइड? 4 categories. So these are the basic points of TDS
repeating TDS on PLI, RPLI payments. It is intimated that the functionality of TDS applicability with submission of 15G, 15H form by the insurant on any kind of payments claims of PLI and RPLI has been deployed in McAmis system on 14 January 2026. हमारा APT 20 एक प्लेटफॉर्म है, मैकामिस एक PLI RPLI का है, कोर बैंकिंग CBS का है. इसमें इंटरलिंक्ड होता है, ओके, डेली अकाउंट निकलता है. इसको आपको देखना पड़ेगा. दोज हु आर गिविंग द and this subject is applicable for all the aspirants, those who are, because it is a PLI is a premium product and service. So MTS, postman, PASA सभी के लिए ये वीडियो ज़रूरी है. Important thing is 2% on the difference of the total payments minus total premium paid. No TDS if 15G, 15H form and PAN is valid, PAN is linked with the policy. Policies are classified 4 categories, and in some cases there may be the premium कभी भी कम हो सकता है सम अशोर्ड से इसमें. सो द रेसिडुअल अमाउंट शुड ऑलवेज बी इन पॉजिटिव फिगर. नेगेटिव होने से TDS नहीं कटेगा. अमाउंट पेड एंड प्रीमियम पेड शुड बी इन पॉजिटिव. नो TDS विल बी डिडक्टेड इफ द इंश्योरेंस सबमिट्स द डिक्लेरेशन फॉर्म 15G एंड 15H अंडर IT एक्ट. अभी फाइनेंस एक्ट हो गया, इसको आपको देखना है. सो दिस इज ऑल, दीज आर द न्यू थिंग्स कम ड्यूरिंग last 1-2 months. Previously I have uploaded 24 speed post, 48 speed post. Thereafter 2 rules have come. One has 24 speed post parcel video uploaded, and this is TDS on PLI RPLI payments. TDS on PLI RPLI payments. So I will go on uploading videos one by one. So please bless me in uploading such informations, and feel free to send a WhatsApp message to take my publication, because I have tried a lot in preparing the documents. I will be happy if you will take the publication, give a message. So there is a deduction nearly 20-30% डिस्काउंट हमने कर दिया है. पोस्टेज के साथ आपका PA बुक के लिए 879 देना पड़ेगा, और पोस्टमैन MTS के लिए ये ज़्यादा पेज हुआ है इसलिए 900 देना पड़ेगा. When you will send a message in my WhatsApp number 9437226110, one message will go about the procedure. Don't worry, your money is always safe, as because I am one of the senior superintendent of post offices who has recently retired. So have a good day. Read thoroughly, smartly, and revise the subjects. Time is always utilize the time, and view the videos. I think it will be very useful for you in preparing the examination. Again, thank you for watching the video, and I am waiting for your response. Thank you. Have a good day. Thanks.